डियर स्टूडेंट, आई एम मनोहर पाटिल। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। नाउ अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज करंट सो मेनी चैप्टर्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे ताकि आपका जो पढ़ाई होगा 11th और 12th फिजिक्स का वो अच्छे से होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जब भी एग्जामिनेशन को जाओगे, नीट जेई और सीटी कोई भी एग्जामिनेशन होने दीजिए, इसके लिए इसके कंसेप्ट आपको पता ही होने ही चाहिए। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो इन दिस चैप्टर हमें बहुत सारे कंसेप्ट का पढ़ाई करना है। सो दीज आर द सम कंसेप्ट वी हैव टू थ्रू आउट द चैप्टर। हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और सेकेंड वन इज निगेटिव। देन हमें पढ़ना है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी चार्जेस के सराउंडिंग में जो भी इन्फ्लुएंस रहेगा, तो उस इन्फ्लुएंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और वी हैव टू स्टडी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज उसका हमें फार्मूला भी कंप्लीट करना है। देन उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इन सच वे दैट हम चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स बिफोर स्टार्टिंग द ऑल we require the some basic law and the most important law of electrostatics, that is Coulomb's law. सो कुलम्स ही वॉज अ साइंटिस्ट। उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया। मैंने अभी आपको बोला कि इलेक्ट्रिक चार्जर दो टाइप के, एक पॉजिटिव और सेकेंड वन इज निगेटिव। अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया, इफ वी कंसिडर द टू चार्जेस, द चार्ज Q1 एंड द चार्ज Q2, बोथ आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r। हमने स्पेस कंसिडर कर लिया वैक्यूम में। सो बहुत सिंपल है। सो वन चार्ज में बी पॉजिटिव और अनदर चार्ज में बी निगेटिव। देर आर द फोर ऑब्जर्वेशन। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन? बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है बोर्ड की तरफ। अगर हमने कंसिडर किया कि फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव है और सेकेंड भी निगेटिव है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमें करना है सेकेंड चार्ज, अगर हमने लिया नेगेटिव और निगेटिव, दोनों को निगेटिव किया, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, सो हमें पता है कि दीज आर द फोर ऑब्जर्वेशंस है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर दोनों चार्जेस प्लस रहेंगे तो उसके बिटवीन जो भी फोर्स एक्ट होगा वो रिपल्सिव नेचर का रहेगा। नेक्स्ट वन, अगर दोनों चार्जेस निगेटिव रहेंगे तो भी जो भी फोर्स एक्ट होगा बिटवीन द चार्ज फर्स्ट एंड सेकेंड वो रिपल्सिव नेचर का रहेगा। बट व्हाट हैपन व्हेनेवर वन इज प्लस, अनदर इज negative? If first is negative, another is positive, what happen in that case? The force of attraction between the two charges is present. तो हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशन होता है कि फोर्स का जो भी नेचर रहेगा वो दो टाइप का नेचर है। आइदर नाउ इट इज repulsive in nature, this is the repulsive in nature, and next one is attractive in nature। तो कुलम्स ने इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया और अकॉर्डिंग टू दैट ही राइट डाउन द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, दैट इज the force of attraction or repulsion between the two charges, the force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to product of their magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बहुत सिंपल है, अच्छे से इसको रिमाइंड करना है। व्हाट इज द लॉ? दैट इज, सो कुलम्ब स्टडी दैट टू चार्जेस and he found that the force between the two charges either in attractive nature or either in repulsive nature. So we make the statement, the force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them. So now here he add the constant of proportionality, that is k. So where k is the constant of proportionality, and he found that, so the value of k, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. So this is the Coulomb's law. So very easy to remember. Most importantly, now here this is the force of attraction or repulsion between the charges. Q1 and Q2 are the magnitude of both charges. R is the distance between them. And remember that epsilon naught is the most important physical quantity. That is, it is the permittivity of free space. Permittivity of free space. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो भी ऐसा यूनिट है और डायमेंशन है वो डायरेक्टली जेई नीट और सीटी के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो बहुत इजी टू इसके ऐसा यूनिट और डायमेंशन आप अच्छे से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम देखते हैं अभी नाउ देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, ही स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, बट ही वो ऑलरेडी 10th में है, लेकिन ही स्टडी द 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स।
सो मैं उसको अभी स्टेज पे बुलाऊंगा और देखते हैं कि वो उसका SI यूनिट और डायमेंशन लिख सकता है या नहीं लिख सकता है. कम द ऐश्वर्या ऑन स्टेज. 1 minute. I will make less more space for you. So write down the SI unit and dimension for permittivity of free space. SI unit and dimension. Yes. Okay. So for SI unit, we'll transfer epsilon naught to the LHS side and force to the RHS side. So therefore, epsilon naught's formula will be 1 upon 4 pi into Q1 into Q2 charges upon force into R square. So this will be the formula for epsilon naught, and epsilon naught's SI unit will be epsilon naught. We already know Q1, Q2 are the charges. So square of the charges will be Coulomb square upon force. Force SI unit is Newton. So we will take Newton, and R square means meter square. So M2. So this will be the dimension. This will be the SI unit for epsilon naught. Dimension for epsilon naught will be epsilon naught Coulomb square. As we already know that Coulomb square is IT whole square. So IT whole square upon Newton. We already know force dimension M1, L1 and T minus 2. So we will write it down M1, L1, T minus 2 and meter square. Meter square dimension will be L2. L2. So adding up this denominator dimension, we will get IT whole square upon M1. L will be transferred to L1, so L3 we will get, and T minus 2. So taking the numerator side to the denominator side to the numerator side, we will get the final dimension of epsilon naught will be M minus 1, L3 minus 3, sorry, T, this is 2, so this is minus 2, we will get plus, so L4 and I square. This will be the final dimension of epsilon naught. Thank you. This is the T. T. T, sorry. T for, yes. T. Okay. Very good. So in such way that, stay here. So in such way that, so now today we complete, so very simple topic. So that is, we complete the Coulomb's law. The statement is very easy. Remember the statement, the force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to product of their magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. After that, we apply the constant of proportionality. Now here epsilon naught means that is permittivity of free space. And now I challenge the Aishwarya who studied only 10th standard, but he solved the dimensions of class 11th or 12th physics. So he look at the board now, he properly write down the formula. After that, he write down the SI unit correctly and then go for the dimensions and he calculate the correct dimensions. So minus 1, minus m raised to minus 1, L raised to minus 3 and T raised to 4 and I raised to 2. So this is the correct dimensions of permittivity of free space. So thank you very much Aishwarya, you calculate the SI unit as well as dimensions. So I hope dear student all of you are understood the SI unit and dimension और मैं होप करता हूँ कि जैसे ऐश्वर्या ने SI unit और dimension कैलकुलेट किया आप सभी भी घर पे जाके उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और ट्राई टू कैलकुलेट द SI unit एज वेल एज डायमेंशन. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट तो जरूर करना है. थैंक यू वेरी मच.